One of the defining images of the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin is Prime Minister Narendra Modi's warm engagement with Vladimir Putin and Xi Jinping. This comes in wake of tariff levied on India by Trump administration. So the question is, what this round of diplomacy has led to. Is this a big reset between India and China or a tactical rearrangement necessitated by Trump's action? Has America lost a valuable ally in India? Will Russia-India ties deepen further? We will discuss all this, but for our viewers, we have divided the On Point in 4 parts. The first part will deal with India-China ties reset. The second part will deal with border issue and China's proximity with Pakistan. The third part will deal with India's trade imbalance with China. And the fourth part will deal with Modi-Putin's message to Donald Trump. So the chapter 1. At the delegation level meet with Xi Jinping, Modi said India is committed to taking forward its ties with China based on mutual trust, respect and sensitivity. Prime Minister Modi noted there is peace and stability along the border following last year's disengagement process. He said India and China both pursue strategic autonomy and their relations should not be seen through a third country lens. Both sides reached an understanding that their principal priorities lie in domestic development. Modi and Xi agreed that the vast population of both nations, together comprising 2.8 billion people, stand to gain far more from cooperation than from confrontation. Emphasizing that terrorism is a universal threat, Prime Minister Modi warned against selective approaches. Both sides agreed to resume direct flights and the Kailash Mansarovar Yatra. During the engagement, President Xi Jinping laid out principles to guide future relations. These include deepening strategic communication to strengthen mutual trust, expanding bilateral exchanges and collaboration, and respecting each other's core concerns while enhancing multilateral coordination. China and India are two of the most civilizational countries. We are the world's two most populous countries and part of the global south. It is vital to be friends, a good neighbor, and dragon and elephant to come together, quote unquote, she said. She also called for safeguarding the UN-centered international system and rejecting bloc confrontation and bullying practices. SCO strongly condemned the Pahalgam terror attack and concurred with India's position that double standards in the fight against terrorism are unacceptable. शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। Fourth, we uphold fairness and justice, promote a correct understanding of World War II history, and oppose Cold War thinking, bloc confrontation, and acts of bullying. We safeguard the international system with the United Nations at its core, support the multilateral trading system centered on the World Trade Organization. We should advocate for equal and orderly multipolarization of the world, inclusive economic globalization,
and promote the construction of a more just and equitable global governance system. We should work to build a more just and reasonable global governance system. So the big question is that has anything changed on ground? On this, I'm joined by Ambassador Veena Sikri, Professor Swaran Singh from JNU, and my colleague Manish, who joins me straight from Tianjin, who has covered the SCO summit. A warm welcome to all of you on Point, and Manish, especially to you for joining me from Tianjin. My question to you is your ground assessment. You are there, reported the event. Your thoughts? बिल्कुल अपनी बात मैं ठीक से रख सकूं इसके लिए मैं हिंदी में ही कहना चाहूंगा कि देखिए कुल मिलाकर एक नई हवा बह रही है। देखते हैं कि ये कितना लंबा चलता है। मतलब जैसे अक्सर हम कहते हैं कि रूस और चीन का जो संबंध है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का है, तो भारत और चीन को के संबंध को आप किसी मैरिज से या लिव इन रिलेशनशिप से अभी डिफाइन मत करिए, लेकिन हाँ आप कोर्टशिप कह सकते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं कि चलिए किस तरीके से हम साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कोशिश नहीं की थी। 2014 से 2020 के दरमियान, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच कुल मिलाकर 18 मीटिंग हुई थी, बायलैटरल और मल्टीलैटरल मिलाकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गलवान हो गया, फिर 5 साल की तनातनी हुई और फिर कजान में हम मिले और अब दोबारा यहाँ पर मिले हैं। तो एक काफी गर्मजोशी है और तियानजिन में मैं कह सकता हूं कि भले ही एससीओ समिट में 20 देश के नेता आए, लेकिन शो स्टॉपर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी थे और ये बात चीनी लोग भी मान रहे थे। अभी देखिए इस बीच में काफी कुछ बदला है, वो केवल भारत और चीन के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात बदले हैं। रूस और यूक्रेन के बाद स्थिति बदली है। अब रूस भी चीन को लगातार दबाव दे रहा है कि आप भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और यही चीज आपको आज दिखा भी जब एससीओ समिट के दरमियान प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अनयूजुअली बात करते थे, अमूमन ऐसे दिखता नहीं है, तो तीनों के बीच के जो रिश्ते थे जानबूझकर इसका एक मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश हो। तो कहने का मतलब ये है कि भारत और चीन दोनों बड़े मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया बड़ी है, भारत और चीन से बड़ी है और भारत और चीन दोनों ये बात समझ रहे हैं। और इसलिए एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक बड़े प्लेटफॉर्म को देखते हुए भारत और चीन ने साथ आने के लिए सोचा और जिसका परिणाम है कि तियानजिन में इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिला और हो सकता है कि आने वाले समय में ये इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। लेट मी स्ट्रेट अवे गो टू एम्बेसडर वीना सिकरी। मैडम, योर ओपनिंग थॉट्स एंड डज दिस मीन दैट in a way we have expressed our displeasure with the Trump administration? If you decode the photo optics, the way Putin waited for the Prime Minister for 10 minutes, then they traveled all the way to the venue, which is 45 minutes, and then the bilateral took place, another 45 minutes, and the way even Xi Jinping reciprocated. I'm not saying that the entire ground situation changes, but the photo optics definitely was strong, ma'am. Yes, absolutely. I think you're right that the principal conclusion is on India adhering to its policy of strategic autonomy. And this doesn't mean that foreign policy is a zero-sum game. So if we are developing relations with China and with Russia, it doesn't mean that this is at the cost of America. But if the tariffs issue that Trump has brought in so recently and is putting in the extra 25% on India for buying Russian oil, India is certainly free to express its views on that. And we have done so. We have called it unfair, unreasonable and unjustified. Now coming to the India-China relationship, I think I would not link it directly with the tariffs at all, because the real breakthrough came last year in October 2024 when Prime Minister Modi and President Xi Jinping met in Kazan on the sidelines in Russia, on the sidelines of the BRICS summit. And at that time, India has always told China that peace and tranquility at the border is a prerequisite for developing relationship between India and China. And in fact, that peace and tranquility had existed before 2020 because of previous agreements that we have with China. Now, when China decided to break those agreements and attacked in Galwan, that led to a serious dip, nosedive of the India-China relationship. But I think China too has now recognized the importance of having a good relationship with India, and the breakthrough which came last year is now being built upon. It was built upon when Foreign Minister Wang Yi came to India about 2 weeks ago,
and there were important meetings. And then again, the peace and tranquility at the border was emphasized. And based on last year's agreement, the disengagement has started. And we hope it will continue.